Dear students, we are on explanation of this chapter patriotism paragraph by paragraph. Let's move to the paragraph number 1. Before going to the explanation, let's discuss some difficult words you might came across while reading this paragraph. The first word is motherland. The word motherland means the land where you actually belongs. उर्दू में हम इसको आबाई सरजमीन कहेंगे. Other word is devotion. Devotion actually means your love and your loyalty with something. Here it is used for country love. The third word you might came across or you might feel difficult is patriot. Patriot is a person who actually loves his country. उर्दू में हम उसको मुहिब्बे वतन कहेंगे. The fourth word is commendable. Commendable हम उस क्वालिटी को कहते हैं जो appreciable हो, जिसकी appreciation की जा सके. For example, patriotism is a commendable quality. Students, let's move to the explanation of paragraph number 1. In the very first paragraph, writer actually defines term patriotism कि हुब्बुल वतनी अपनी वतन से मोहब्बत या अपनी धरती माँ यानी वो जगह जहां हम पैदा होते हैं उनसे मोहब्बत और उल्फत का नाम है. बाद में he moves towards the defining the qualities of patriot कि हुब्बुल वतन वो शख्स है जो अपने वतन से प्यार और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में राइटर ने हुब्बुल वतनी और हुब्बुल वतन को डिफाइन किया है कि हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत और वतन से मोहब्बत करने वाले को हुब्बुल वतन कहते हैं. Students, I hope you understand this paragraph. Let's move to the other one. Thank you.